Hey, hi everyone. Good evening, guys. Hi Jagdish ji. Hi Mahesh ji. Hi Suraj ji. Am I audible, guys? Yes, Yes, you're sir. clear. Got it. Got it. Hi Suraj ji. So, guys, just a few more minutes after that, we'll start the session. But meanwhile, एक छोटा सा introduction कर लेते हैं. So, guys, my name is Tanmay Gupta. I'm looking after product marketing at Aram. राइट एंड गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहूंगा लाइक हाउ वुड यू वांट मी टू स्पीक. आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं, पंजाबी, मराठी? मुझे वैसे हिंदी और इंग्लिश ही आती है बस. महेश जी, विधान जी? So both are fine, sir. बोथ आर फाइन. गॉट इट. सो इट्स गोइंग टू बी लाइक मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, राइट? Yeah, it will do. सो दैट Mix up language will do. Hindi English will do. Nice. वर्क्स. सो जब तक हम सेशन स्टार्ट करते हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा सर. अभी प्रीवियसली हम लाइक वी हैव स्टार्टेड दिस वेबिनार सीरीज. आप लोगों में से कितनों ने हमारा पहले भी वेबिनार अटेंड किया है? एनीवन? तेज जी, वेदांत जी, किसी ने हमारे प्रीवियस वेबिनार अब तक अटेंड किए हैं? No, sir, No, this sir. is It's my the first time. my first also. ओके, फ्रेश ऑडियंस. लाइक अब तक किसी ने नहीं किया. नो वरीज. So just to give everyone a brief, guys, basically we have started this webinar series, right? Where we are, picking topics based on the entire journey of the solar installation, right? सो सोलर इंस्टॉलेशन में आपको क्या क्या चाहिए होता है. आपको डिजाइन्स की जरूरत होती है, आपको मॉड्यूल्स की जरूरत होती है, आपको कंपोनेंट्स की जरूरत होती है. देन आपका इंस्टॉलेशन वाला पार्ट आता है कि आप इंस्टॉल कैसे करते हैं, राइट? देन उसके बाद आपका मॉनिटरिंग एंड ओएनएम वाला पार्ट आ जाता है, राइट? सो वी हैव स्टार्टेड दिस वेबिनार सीरीज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस. एंड अगेन थोड़ा बहुत हमारा भी प्रमोशन हो जाता है, राइट? सो बेसिकली the last two webinars, the first webinar we did was on design services, right? How solar designs can help EPCs close the leads basically. आजकल मार्केट में काफी सारे डिजाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, राइट? आपके पीवी सिस्ट हो गया, हेलियोस्कोप, देन आजकल आर का 360 काफी चल रहा है, राइट? सो हाउ दो सॉफ्टवेयर हेल्प यू गाइस. देन उसके बाद हमने नेक्स्ट वेबिनार किया था हाउ टू सेलेक्ट द राइट मॉड्यूल, राइट? अब डिजाइन के बाद आपका कंपोनेंट सिलेक्शन आ जाता है. आप इन्वर्टर्स लगाते हैं, आप मॉड्यूल्स लगाते हैं, राइट? आपकी बैटरीज वगैरह लगती हैं, केबल्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, करेक्ट? सो लास्ट वेबिनार वी डिड वाज विद द मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर एक्सिटेक. अगर आप लोगों ने एक्सिटेक के बारे में सुना होगा, राइट? सो बोथ दोज वेबिनार्स आर अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल. If you guys are interested, please feel free to visit our YouTube channel, राइट? अब लाइक सबसे पहला वेबिनार जैसे मैंने आप लोगों को बताया वाज ऑन डिजाइन सर्विसेज. द सेकंड वाज ऑन मॉड्यूल्स, राइट? नाउ द थर्ड वेबिनार एंड द टुडेज वेबिनार एंड क्वाइट स्पेशल वेबिनार is on the topic mastering solar installation, right? What are the best practices of solar installation, correct? And today we also have one special guest. आगे जाके हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे उनसे भी, right? So that's why like we have a basically called an external basically veteran in this solar industry basically, right? So after that we'll introduce to him as well. So B, I think we should start today's session. So what I would first introduce to Mr. Piyush Sharma. He is our enterprise sales head at Aram, right? So Piyush, over to you. Thanks, Kanmay. Good evening, everyone, and thanks for joining. We can go to next slide. Yeah. Okay. Yeah. तो एक कॉन्टेक्स्ट पहले सेट कर देते हैं. आई थिंक तन्मय ने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया व्हाई दिस वेबिनार. सो एज यू कैन सी ग्रोथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर इज हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट पेस. बी इट पीएम सूर्य घर हो या फिर सीएनआई के केस में कुछ स्पेशल स्कीम्स हो, एग्रीकल्चर में पीएम कुसुम हो. So this all different schemes and other initiatives are creating big opportunities. तो इसको आप देखें तो it's almost 100 gigawatt of opportunity in a very in the short to medium term, creating almost 3 to 3 lakh 50,000
crores of opportunities. Now, because of this opportunity, a lot of opportunities are coming on the EPC side also. इसकी वजह से काफी एक बड़ा influx हो रहा है. We are seeing lot of aspiring upcoming emerging installers and EPCs. But the challenge is कि they are facing challenges because first of all they don't have or they may be lacking access to adequate knowledge. That is one thing. Where lack of formal training also becomes hurdle at times. Or at times access to quality finance components and tools also becomes a big hurdle. So because of these challenges, what it results in, it might lead to poor workmanship अगर experience नहीं है और if somebody is installing it for the first time without proper knowledge, poor workmanship होगा. It will lead to high cost because of other factors, because if he doesn't know the installation, it may cause extra cost on the other side. Longer project cycle हो जाता है ये. This also becomes a cause of higher cost because आप similar time में 2 या 3 project शायद कर सकते हैं. And ultimately it also results in the dissatisfaction of the customer. इस context में we have started with this series of webinars. Idea is to equip emerging installers with the necessary knowledge and resources to foster their business growth. So that is the whole idea behind this webinar series. एक brief introduction आपको ARAM के बारे में दे देता हूँ. So ARAM is kind of EPC's one-stop solution. How it is doing this is that one is a solar loan for the end customer. So through solar loan services, it is empowering the EPC's customer solar journey. Supply chain finance, many a times EPCs को capital constraint आते हैं, which becomes a hurdle in their business growth. So by providing the supply chain finance services, ARAM removes the capital constraint. Then AAA is our in-house design and technical services, which is kind of enabling high quality project delivery through top-notch engineering design and quality support to EPCs. Then marketplace. Marketplace में many of the times I think EPCs struggle करते हैं to figure out how to buy, where to buy. So हमारा एक in-house marketplace भी है which is called Sun Store. So through that our EPC partners can place the orders and manage their procurement easily at a competitive rate. हाँ जी कोमल मैम. And finally, the monitoring piece. So we have an in-house developed monitoring platform also, Okay. which is helping EPCs in doing the post-installation management. It is hardware agnostic, integrated with more than 20 inverter brands. So that way एक EPC के लिए ये आसान हो जाता है कि उनका सारा पोर्टफोलियो एक ही जगह पर मॉनिटर हो पाता है. So these are the things about ARAM. अभी आप इसकी जर्नी देखें हमारे इकोसिस्टम की, प्रोडक्ट इकोसिस्टम की. तो दिसंबर 20 में व्हेन वी स्टार्टेड एज इंडिया फर्स्ट सोलर फोकस एनबीएफसी. मार्च 21 में हमने अपना AAA प्रोग्राम और प्रोडक्ट लॉन्च किया था, विच इज टू एनेबल EPCs इन डिलीवरिंग द क्वालिटी प्रोजेक्ट. Jan 22 में हमारा एरॉक मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म जून 23 में हमने लॉन्च सप्लाई चेन फाइनेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया था. Jan 24 में सनस्ट्रो मार्केट प्लेस लॉन्च किया था. April 24 में वी हैव लॉन्च्ड आवर पार्टनर पोर्टल विच इज लाइक सिंगल इंटरफेस फॉर ऑल द EPCs में. तो जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं पार्टनर पोर्टल से. अर्लियर इट वाज अवेलेबल इन वेब वर्जन ओनली. अभी अक्टूबर में रिसेंटली हमने इसको ऐप फॉर्मेट में भी लॉन्च कर दिया है. तो एंड्रॉइड और iOS वर्जन दोनों आपको मिल जाएंगे. आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बाय गोइंग ऑन द ऐप स्टोर, और ARAM पार्टनर ऐप आप कीवर्ड डालेंगे तो you'll find this out. Overall, we have 800 EPCs partners, 50 plus years of solar and financing experience, 400 plus solar projects finance, 500 plus megawatts of solar enabled, more than 15 plus inverter brands, and 300 plus projects we are monitoring currently. Now coming to the AAA part, which is how we are kind of acting as a companion for quality project delivery to EPCs.
We help EPCs in building the right design. इसमें हम design assistance provide करवाते हैं to which becomes a strong foundation for a good solar project. Right equipment, our AAA team helps you in selecting the right equipment, right execution. So it provides a technical know-how of managing a good project, doing a good project management, or finally the right monitoring. Now, this is the profile of our today's speaker. Harsha comes with 12 years of experience, very deep, rich experience. He was one of the founding members of Zold, which was one of the first generation EPCs. Harsha का total experience portfolio wise 80 megawatts का है, which is in rooftop it is almost 2,500 projects across 21 megawatt, और utility में 7 projects across 58 megawatt. Apart from that, Harsha is currently is the founder of firm Solar Buyer, where he is helping customers in making the right choices. On the other hand, he is also helping EPCs in terms of knowledge, in terms of growth, consultancy, etc. So over to you, Harsha, and welcome to the webinar. Yeah, thanks, Piyush. Good evening, everybody. Good to be here. Thanks for joining. Thanks for your time. Thanks, Piyush, for the introduction. तो जैसा पीयूष ने बोला, I've spent around 12 years plus in this industry. मतलब as a EPC, as a builder. Right now, I'm supporting end customers, whoever wants to buy solar, in making the right decision. So I hope this presentation will be useful to you in terms of how you can actually spend your time and effort in installing the best project that you can give to your customer. Tanmay, yes, can we? Yeah. So now, when we are talking about a high quality installation or a mastering the solar installation, what does that actually mean? मतलब high quality installation किसको बोलते हैं हम लोग? So I would define this again. Please feel free to ask your question, raise your hands. Let's make it more interactive, right? So I'll start by defining a high quality installation. तो पहला तो जो भी installation आप कर रहे हैं, it has to be in accordance with the standards जो MNRE define कर रहा है standard, या डिस्कॉम define कर रहा है, या आपका जो लोकल डिस्कॉम और नेट कैप या जो भी नोडल एजेंसी है, थोड़े स्टैंडर्ड्स दे के रखे होंगे. So you'll have to meet those kind of standards first. Then, secondly, a good installation, a high quality installation, is something that keeps performing for the next 20-25 years. That is, its designed lifetime, without actually bothering you all the time. So, अभी for example, मेरा earliest installation हमने on grid system लगाया है 2012 में. तो 12 साल से सिस्टम चल रहा है. हमने उस टाइम पे थोड़ा we've used some particular Indian modules but a German inverter, but for the last 12 years all we do is like 3-4 visits in a year, general maintenance, never faced any issues. So we want those kind of systems performing, which will reduce the burden on you in terms of maintaining or service issues or responding to these customer complaints, right? Then third, how do we define a good installation, high quality installation? Is it has to meet your or exceed customer expectation. तो इसमें अभी कस्टमर के कई एक्सपेक्टेशन रहते हैं. तो पहले तो आपको कस्टमर का एक्सपेक्टेशन सेट करना पड़ेगा कि what exactly are you going to provide to the customer, what are you promising, and then what are you actually delivering. तो उसमें गैप आपका बहुत कम रहना चाहिए. That means the promise versus actual delivered, वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन का गैप कम रहेगा. तब क्या होगा कि कस्टमर को समझ में आएगा कि ओके, इन्होंने जो बोला है वो लगा दिया है, तो मेरे को भी आगे से जाके प्रॉब्लम नहीं होगा. And then finally, as I told you, a good installation, a high quality installation will actually reduce your time in repairs and maintenance.
सो एवरी टाइम कुछ कस्टमर का सर्विस कंप्लेंट आया और आपके साइट इंजीनियर या किसी को आपके इंस्टॉलर को भेज दिया आपने, उसका आपका खर्चा होगा 500 रुपये से 1000 रुपये आज के डेट में, राइट? वॉट एवर इज द मैकेनिज्म। तो एवरी टाइम ये वारंटी के अंदर आप कर रहे हैं, ये एक्चुअली आपके प्रॉफिट मार्जिन से जा रहा है ये पैसे। So please look at so the solution to this comes much before this, where you start with installing the right material, install it in the right way, designing it in the right way, and then end of day आपको जाके आएगा कि एक अच्छा सिस्टम लग गया है और मेंटेनेंस मिनिमम करना पड़ेगा और सर्विस कंप्लेंट्स आपको ज्यादा कुछ आएंगे नहीं. So this is how we would define a high quality installation. Now, coming to the next part. So once we've defined a high quality installation, now how do you master it? Right. So I would divide this into 4 different categories. Right. So as I told you, even before you go to the site, the key to mastering a high quality installation starts from your procurement. So you need to identify material, your solar panels, inverters, structures, entire BOS in the right context for your the money that you're charging. ऐसा नहीं है कि सब हम यूरोपियन ब्रांड लगा दिया, बेस्ट एंड बेस्ट लगा दिया, बट आपको 30 रुपए का ईपीसी रेट मिल रहा है, राइट? बट उसके कॉन्टेक्स्ट के वॉट एवर अकॉर्डिंग है, यू विल हैव टू procure the right material for your customers, right? Followed by doing a good engineering. Now that starts with a good site visit. Now, who goes to the site visit? Is that person actually trained to do a good site visit? And what is the feedback that you're getting from the site visit? All these things matter in your installation. एक बार इंस्टॉलेशन हो गया, एक बार साइट विजिट हो गया, आपने डिजाइन कस्टमर को सबमिट कर दिया, फिर आता है एक्चुअल इंस्टॉलेशन का काम, जो इंस्टॉलेशन में आपका टीम को भी देखना पड़ेगा और आपकी टीम के लिए भी देखना पड़ेगा, जो सेफ्टी है, क्योंकि एनी गुड साइट इज a safe site for your team and also for your customers also, right? And then एक बार प्लांट लग गया, उसके बाद आप जा रहे हैं क्वालिटी अश्योरेंस में. दैट मीन्स ये क्या है कि इसको आपने एक्चुअल स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं कि ओके, इज दिस डन एज पर योर रिक्वायरमेंट, इज दिस डन एज पर योर स्टैंडर्ड, so then are there any corrections to be made? So that is the quality assurance that you do, right? So I hope so this is a basic, very high level breakdown of all the components that will help you create a high quality installation. Next slide, please. Okay, so these are some examples of sites across India that I have seen personally, जो एक्चुअली एक फेल्ड साइट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसमें कोई बता सकते हैं कि क्या क्या फेलियर पॉइंट्स है? लाइक इस पिक्चर को लेते हैं पहले, इसमें क्या फेलियर पॉइंट हो सकता है? प्लीज फील फ्री टू आंसर. Shadow area around the panel. The adjoining building is having shadow on total system. Absolutely. Yeah. So this is a failure of the engineering design or future planning as well, right? Now, what could this be? Now, this is a very obvious thing. This I picked up from LinkedIn. So this is very stupid to even say, right? Forget about it. But what about these things? Now, these are things that we usually see, right? In the panels, under the panels. Now, what are the failures that you notice in these sites? Overlapping. Overlapping of the panels. Panels. This absolutely. And structure is very weak. Correct. That's correct. So this is, I agree. What about these two in the bottom? Bracing issue. Not a proper wiring. Yeah. So wiring is bad.
Not some proper wiring, as well as uh, the usage of the space is not advisable. correct. And also all your cables are hanging, so somebody has not actually put up a cable tie system. The Even MC4 connectors are lying on ground. They might exactly, get affected by the rain. absolutely, absolutely, you're right. And this will also create heat related failure issues. Then you'll have sparking in your plant. This the dressing is so bad, the cables keep going, rotating. They are not following the curvature of the actual cable. So each cable, AC cable, especially armored cables, they have a curvature on the cable. So you'll have to respect that. If you keep cramping the cable, then what happens is it will lead to a failure. Now, all the plants that you install, please keep in mind that it has to work for the next 25 years with minimal maintenance, right? So these things will not have a problem in the first few years. Then you'll need to actually go ahead and in a few years, then the problems start appearing. So these are a few things. I'm sure you would have seen a lot of sites which have more problems, but these are the things that I could see in a few sites. Now, can we go to the next slide, please? Yeah. So I'll not spend a lot of time on this. So as somebody rightly said, I think so Piyush has said. So I think a webinar has already been handled on in terms of the procurement and what are the factors that you can do to evaluate solar panels, inverters. So there are multiple parameters. Now, unfortunately, in India right now, we are seeing a very price driven market, competitive market. तो सब कुछ सिर्फ इसमें होता है कि कितना क्या रेट है, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, जो भी है. तो दैट इज वन पॉइंट. डेफिनेटली वी आर हियर टू मेक अ डिसेंट मार्जिन. हम धंधा चला रहे हैं, तो इट हैज टू मेक प्रॉफिट. But at the same time, I would strongly request you to consider a few more parameters along with your price, right? So one is the technical criteria. Now each component that you use will have different technical criteria. Again, at the end of this, I can you can reach out to me. I can share some criteria for every component that you can use to evaluate different panels, right? Similarly, on commercials, when you're looking at procurement, please look for approvals and availability. Now, a lot of components, you'll have to see if they are in, if it's a module, is it in ALMM? Or if it's an inverter, is it BIS certified? And so on and so forth. Now, the third thing that you would be looking at is the service reputation of who you are procuring it from. जैसे कि अभी आप डीलर के डीलर या सब डीलर से आप ले रहे हैं, और फॉर एग्जांपल मैं हैदराबाद में बेस्ड हूँ, और मैं कोई दिल्ली के कंपनी से मैं मटेरियल उठा रहा हूँ क्योंकि वो 2000 कम में दे रहे हैं. लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, मेरे इन्वर्टर में फेल हो गया या कुछ और कंपोनेंट में फेल हो गया, तो दैट दिल्ली कस्टमर, दिल्ली वेंडर कैन नॉट कम ऑल द वे टू हैदराबाद. तो उसके लिए फिर मेरे को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, सामान भेजना पड़ेगा, वापस आएगा. सो दोज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. Go for somebody you know personally, or companies which are well established in this market. Like again, ARM has a very good brand store, Sun Store, where you can get your own modules. Now I think they have a huge network of service and support. Along with that, there are multiple other distributors who are both reputed nationally and internationally, where you can choose and get material from. So service reputation is very important. Choose an inverter, especially an inverter which is going to stay with you for the next 5, 10, 15 years as a company. So don't go with inverters which are like not very established right now, especially in terms of the Chinese inverters. आज है, कल चले गए, फिर आपको spare parts नहीं मिलेगा, काफी issues हो जाते हैं. So choose some good inverters, Chinese, Indian, German, doesn't matter.
where they have a history of operating in this market, and also they have long-term plans in this market. Right? Then finally, I would like to consider and strongly urge you not to ignore balance of systems. क्योंकि ये क्या होता है कि 5% से कम आपका कॉस्ट बैलेंस ऑफ सिस्टम में लगता है आउटसाइड योर पैनल इन्वर्टर स्ट्रक्चर एंड सम अदर स्टफ। जो बीओएस में 5% से कम लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा सर्विस इम्पैक्ट आपका बीओएस के वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल MC4 कनेक्टर्स है। MC4 कनेक्टर्स कितना आपको 50 रुपए से 80 रुपए में एक पेयर आता है। और इसमें क्या होता है कि जो इंस्टॉलर है वो 30 रुपए बचाने के लिए या 50 रुपए बचाने के लिए दे गो फॉर अ लोअर क्वालिटी MC4 कनेक्टर, and this leads to accidents, this leads to fire hazards, this leads to also your system not performing well because the connectors have broken, melted, sparking आ गया, जो भी आ गया, right? So go with the best brand that your money can buy right now, right, for your budget, especially in these balance of systems, because these are not very expensive. Do not try to cut corners in this balance of systems, right? Uh, uh, One more important part that I would like to say is when we were maintaining like 600, 700 sites across India, 50 to 60% of the complaints were from the monitoring systems, right? कि कस्टमर आके बोल रहा है कि यार मेरा सिस्टम नहीं चल रहा है, सिस्टम आराम से चल रहा है, डेटा नहीं आ रहा है उनको, या ऐप काम नहीं कर रहा है। और जब भी ये क्या होता है, दिस हैपेंस व्हेन यू चूज अ थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग सिस्टम विच इज नॉट कंपैटिबल विथ योर इन्वर्टर, राइट? तो इन्वर्टर का ब्रांड का मॉनिटरिंग सिस्टम आप प्रेफर करेंगे तो बेटर है मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट? क्योंकि कंपैटिबिलिटी रहता है और आगे जाके भी आपको एक बेनिफिट रहता है कि कुछ भी सर्विस इश्यूज आ गया एटलीस्ट इन्वर्टर वाला बैक कर रहा है। नहीं तो क्या होगा, थर्ड पार्टी इन्वर्ट मॉनिटरिंग दे देगा, वो बोलेगा इन्वर्टर का फॉल्ट है, इन्वर्टर डेटा नहीं भेज रहा है, और मॉनिटरिंग इन्वर्टर वाला बोलेगा आपका डिवाइस ही गलत है। सो दोज काइंड ऑफ इश्यूज प्लीज अवॉइड by choosing a good quality balance of systems. Yeah, any questions up to here? Let me take a minute. Make this webinar engaging. Please अपने अपने questions ask करिए। अगर आपके मन में कोई भी question आ रहा है, please ask. Yeah, yeah. And हाँ, please. आपका आवाज नहीं आ रहा है शर्मा जी। नहीं। Hello. Sir, Yes, as we yes. see a problem connecting to the inverter by the apps only, sometimes we face a problem कि सोलर सिस्टम आपका काम कर रहा है और उसमें 3-3 महीने से ऐप में डाटा अपडेट नहीं हो रहा है। करेक्ट। लाइक वी सी, अगर अपन देखें तो टाटा के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। टाटा इज अ गुड ट्रस्टेबल ब्रांड। राइट। अगर टाटा अप्रूव्ड इन्वर्टर आ रहे हैं और ऐसी कंपनीज में भी प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो फिर उसके लिए सॉल्यूशंस के लिए हमको हमारी टीम से हर क्वार्टरली एक बंदा एज सच विजिट 5 साल की कंपलसरी है। लेकिन सर वो अपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट है एक तरीके से। जैसा कि आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि 500-700 रुपए भी अगर अपने लगने हैं तो वो अल्टीमेटली अपने प्रॉफिट मार्जिन में से कम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इससे बचने के लिए अपन, आपकी क्या सजेशन है? टिपिकली ये कब होता है आपका, जब फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। हम पहले लगा रहे थे ग्रोवॉट इन्वर्टर्स, ये और ग्रोवॉट इन्वर्टर का अभी इन हाउस मॉनिटरिंग आ गया है, लेकिन पहले शाइन डिवाइस बोल के दे रहे थे, शाइन शाइन मॉनिटरिंग, राइट? सॉरी। शाइन मॉनिटरिंग, तो देर वेर कंपैटिबिलिटी इश्यूज बिटवीन ग्रोवॉट इन्वर्टर एंड शाइन मॉनिटरिंग। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि आपको फिर इन्वर्टर वाले से बात करना पड़ेगा, जाके पूछना पड़ेगा। 2-3 साइट लग जाते हैं, बट एक बार आप अभी फॉर एग्जांपल
या पॉलीकैब का इन्वर्टर ले लीजिए या सनग्रो है, उनका इन हाउस पॉलीकैब मॉनिटरिंग। में पॉलीकैब में भी एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है। तो जब वो इन्वर्टर इंस्टॉल हो रहा है ना, तो ये राइट, अपने को सेट ग्रिड पैरामीटर्स। ग्रिड पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं उसमें। राइट, राइट। वो वो एक्चुअली आपको ना एग्जैक्टली उनका जो पैरामीटर्स देते हैं और इंस्टॉलेशन, उनके इंस्टॉलेशन मैनुअल के हिसाब से आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो जनरली ये इश्यूज कम हो जाते हैं, आते हैं बट कम हो जाते हैं। ग्रिड पैरामीटर्स। सर एक्चुअली हाँ, अपन जब इन्वर्टर प्लांट इंस्टॉल करते हैं तो एक क्लाइंट की भी चॉइस होती है राइट, कि आप करेक्ट, इन्वर्टर प्लीज मेरा इधर लगा दीजिए, तो हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि करेक्ट। अल्टीमेटली हम वो प्लांट इंस्टॉलेशन उन लोगों के लिए कर रहे हैं, वो हम हमारे लिए नहीं कर रहे। आई एग्री। हाँ, तो यस, उसमें थोड़ा सा पैरामीटर के प्रॉब्लम हो जानी चाहिए, लेकिन ये कंपनी को ही बाय डिफॉल्ट सही करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर अपन ऐसी मीटिंग्स में अगर इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से ये बात हम तक पहुंचेगी और वो इन हाउस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। राइट, आई एग्री। एक्चुअली मैं उतना अच्छा मीडियम नहीं हूँ इनके, मेरा कुछ नहीं एक्चुअली वी आर ऑल knowledge नहीं, है। हम भी अच्छे मीडियम नहीं है, लेकिन अगर ये बात आज उठेगी तो कल पहुंचेगी सर। बिल्कुल, बिल्कुल। बट यू शुड रेज दिस विद द डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी उनका इन्वर्टर का आपका कांटेक्ट है। और ये बिल्कुल प्रॉब्लम है। बट ये इंटरेस्टिंग बात आपने जो बोला है कि कस्टमर का भी चॉइस आता है इन्वर्टर का, और आपको कभी उनके साथ स्टिक ऑन करना पड़ता है। तो इसमें ना टिपिकली हैव वन और टू चॉइसेस इन दिस। एक कस्टमर का है, एक आपका है। और अगर कस्टमर बिल्कुल ही अलग ब्रांड सजेस्ट कर रहे हैं, ट्राई टू कन्विंस नॉट टू गो फॉर इट, राइट? क्योंकि अभी मैं अगेन आई गिव यू द सेम एग्जाम, मेरा एग्जांपल लेता हूँ। 650 साइट्स में मेरे 10 से 12 एक कंपनी का इन्वर्टर है, राइट? अभी वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करता है। ओह माय गुडनेस। नाउ 6 साल हो गया, वारंटी खत्म हो गया, कंपनी ने इंडिया छोड़ के चले गया, राइट? अभी कुछ स्पेयर नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? सो स्पेशली आपको जब भी आप देख रहे हैं, ट्राई टू स्टिक ऑन टू वन और टू ब्रांड्स मैक्सिमम, राइट? और हर बार जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या कोई डिस्काउंट दे रहा है, तो आप एक लॉट खरीद के आप लगा रहे हो, ये इवेंचुअली आपको प्रॉब्लम आएगा ये, राइट? जब आप 15-20 ब्रांड के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, सो टिपिकली ट्राई टू अवॉइड इट। हैव वन और टू ब्रांड्स दैट यू हैव इवेल्युएटेड, वेयर आपका सर्विस इश्यूज कम आ रहे हो और सर्विस रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है, और कस्टमर को आप कन्विंस कर सकते हैं कि सर अभी मेरे 100 साइट है जिसमें कोई इश्यू नहीं आ रहा है, और आपका रिकमेंडेड इन्वर्टर है, तो मैं सर्विस उतना अच्छे से नहीं दे सकता हूँ, राइट? सो दोस काइंड ऑफ सेल्स वर्क नीड्स टू बी डन, एजुकेशन वर्क टू द कस्टमर। Okay, we just need to educate them. We don't need to sell our product to them. करेक्ट, करेक्ट। तो ये आपको एजुकेशन जो है वो डेटा के साथ ही आएगा, जो आपके पोर्टफोलियो में दिखा सकते हैं कि इतने सर्विस कंप्लेंट्स में हैंडल कर रहा हूँ, दिस इज द परसेंटेज रेस्पॉन्स एंड सो ऑन, राइट? बट ऑल्सो ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ, अगेन आपको जब स्पेशली पैनल्स इन्वर्टर्स में आप देखेंगे, try to reduce the number of brands that you work with. Stick on to 2 or 3, because it will help you in claiming warranties later on. कुछ भी सर्विस सपोर्ट चाहिए, इंडिया में क्या होता है, अगेन वी सी दैट जब आगे ऑर्डर देने का चांसेस है, तब आपको सपोर्ट बेटर मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर से, राइट? और जब आपने ऑर्डरिंग बंद कर दिया, तो आपको सपोर्ट आपका लेवल कम हो जाता है। So those are things that are usually unsaid, but again, so you'll have to be constantly ordering with these guys. That's when आपका बिजनेस बढ़ रहा है और आपने डी रिस्क करके 2 या 3 इन्वर्टर लगा रहे हैं ब्रांड के, या 2 या 3 ब्रांड के पैनल लगा रहे हो।
not beyond that. And sir, one more thing. What would be an actual strength of a structure? हम जो जीआई का स्ट्रक्चर लगाते हैं उसकी एक Mhm. एक्चुअल बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? देयर आर सो मेनी कंपनी, कोई 4 इंच का लगा रहा है, कोई 40 mm का लगा रहा है, कंपटीशन बनाने के लिए लोग करते हैं, Correct. लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या लगानी चाहिए हमको, यूनिवर्सल स्ट्रेंथ अगर अपन बोल सके? नहीं, तो इसमें कुछ यूनिवर्सल स्ट्रेंथ नहीं आता है एज सच, राइट। इसमें क्या होता है कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप कौन से जोन में ऑपरेट करते हैं इंडिया में, और विंड जोन में, और आपको 150 किलोमीटर्स पर आवर विंड स्पीड रेजिस्टेंस देना होगा आपके स्ट्रक्चर में। सो दैट इंक्लूड्स योर एंटायर फ्रेम, नट बोल्ट, योर बैलास्ट या जो भी एंकरिंग मैकेनिज्म है, राइट, या ब्रैकेट हो या जो भी है। तो ये सब आपको देख के करना पड़ता है। नाउ दिस यू कैन नॉट से दैट मतलब मैं पॉस्मेट का लगा रहा हूँ या हॉट डिप गैल्वेनाइज का लगा रहा हूँ, तो आई कैन गो विद सॉरी कुछ एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. या सो उस टाइम पे आप आपको एक्चुअली दिस इज द पैरामीटर 150 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से आपको डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। इट्स नॉट अबाउट 3 इंच का है या 5 इंच 4 इंच का है, राइट। तो आपको एक स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर कोई स्टैट प्रो रिपोर्ट दे सकता है, फॉर एग्जांपल मेरा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का ये कंपैटिबिलिटी है, यू कैन गो विद दैट। Sorry, is there any other question? Okay, Harshal, like let's move forward a bit. Like we Let's can move take forward. the Yeah, rest of the questions in the sure, sure. like at the end. Let's Yes, go ahead with the slide. yeah. So next, there's an interesting question that I would want to ask now. Like you are working or you are a customer for the medical industry or an aviation industry, right? Like you are either a patient or a flyer. Where do you think your rate of survival is better? Is it in the medical hospital industry or airline industry? Medical industry. Medical industry. Okay, but okay, does anybody agree with him? At least the medical have controls for if anything goes wrong, whereas in aviation industry you cannot do anything because it is beyond your control. Okay. Uh, I'm sorry, I would like to differ on this. Now, if you look at the data, uh, there are more patients dying in the medical industry than crashes happening in the aviation industry, right? Now, control or not, you're lying on the operation table, it's still not in your control. You're sitting in the plane's chair, it's still not in your control, right? But yeah, I understand where you're coming from. But if you actually look at the data, when you go as a patient to the hospital, your chances of survival are lower than when you actually fly in an aeroplane, right? Now, why is that a reason? Because as an industry, the aviation industry is very strict in terms of operations. Then can we go to the next part? Yeah, next one, please. Yeah. So one effective tool that they use is something called a checklist. So if you notice, again, if you have seen any videos in of a pilot flying, or any, even right from the time somebody is actually checking you in at the airport, you will actually see them following the process. So everything is broken down into small steps that each user will actually perform to tick that, right? Saying, okay, how do you check in? Okay, ask for ticket, ask for PNR, ask for passport.
ask for preference of seat. एक tick मार दिया, okay, then next. Right? How do you load the bag? How do you unload the bag? How do you start your flight? There are 70 controls. How do you do that? So every step is broken down. Now, the idea of what I'm trying to say is solar industry also needs to be working at that level where you can break down each and every process into checklist. Now, Abhi, for example, now I'm pretty sure a lot of you guys have your own in-house installation teams. A lot of you guys actually outsource your installation to somebody else also, right? Now there are handovers between. तो एक बार सेल्स वाला कस्टमर को कुछ बोल रहा है और फिर ये इसने ऑपरेशंस को ऑर्डर दे दिया, ऑपरेशंस वाले को नहीं पता सेल्स वाले ने क्या कमिट किया है, और फिर इंस्टॉलर को नहीं पता जो प्रोक्योरमेंट ने क्या दिया है, और फिर वहां साइड जाके कस्टमर चिल्लाता है कि यार ये तो मैंने बोला ही नहीं, या right. So there are lot of issues we have also faced in the past. We tried to solve all that with checklists as a solution. So what you see is a simple checklist that we used to have with our customer, where we are saying that, see, this is the price of your system, this is your payment details, we are promising so and so panel, so and so inverter. You can see here, make of solar panel, make of inverter, right? Then when will we install the system? What numbers are we guaranteeing? Then you have the customer signature, sign off, and the salesperson signature. तो ऑटोमेटिकली एक अग्रीमेंट बन गया कस्टमर और अपने बीच में, कंपनी के बीच में, कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और ये डॉक्यूमेंट जाएगा नेक्स्ट हैंडेड ओवर जब ऑर्डर क्लोज हो गया टू दी ऑपरेशंस का. नेक्स्ट वन प्लीज. तो देन बंदा कंपनी भेजता है एक बंदे को जो साइट विजिट करता है. सो देन द साइट विजिट पर्सन एक्चुअली सीज कि उसका बिल क्या है, क्या आ रहा है, रूफ कैसा आ रहा है, पैनल कहाँ कस्टमर. So if you see on the bottom right, left, sorry, we have actually drawn a roof on a simple way, and we have shown where the panels will be installed. Right? So the customer clearly knows, okay, where is my panel going to be installed on my roof, right? Now you can show that in using a software. You can show that in a physical paper also. Doesn't matter. The idea is to have a visual indication of where the customer's panel system will be installed, the inverters will be installed, and so on. Right? In fact, we have even broken down this process to where what the person who does a site visit has to do. So first of all, has he verified the customer's address? कभी कभी बिल में एड्रेस कुछ गलत रहता है, गूगल मैप्स पे एड्रेस गलत रहता है. तो देन रूफ का इमेज आपने लिया है, सीलिंग का इमेज लिया है, क्या डायमेंशन आ रहा है, हैव यू ट्रेस द केबल पाथ, एसी केबल पाथ. तो ये सब एक एक स्टेप में जब आप ब्रेक डाउन करते हैं तो ऑटोमेटिकली then you would have covered the entire list of activities that you guys need to in order to get the installation done. So when the actual installation team reaches the site, there is no guesswork, right? Now the site in charge doesn't go there and say, "Arey sir, cable has to be here," or "Inverter should I drill here or there?" Right? So those kind of issues are avoided. Now this we have seen also used to. So initially we used to take 3 days to complete an installation at site. Now after implementing all of this, we actually cut down this installation time from 3 days to 1.5 day, from site mobilization to site closure, end to end. Right? So this helps again. End of day, the idea is that you save money, you that goes into your pocket as the owner, as a founder of the company, right? So any efficiency that you bring through in the process will avoid rework at the site, and secondly, it will reduce the time your team spends at the site.
Tanmay, next slide, please. Yeah. Then one thing that we used to also bring is we used to bring this tape, a blue color tape, a red color tape. And when the site visit happens, we used to mark this on the wall where the inverter will be placed, where the junction box will be placed. Because what used to happen is when we tell the customer that this is where the inverter is done, then we procure everything according to that design. After the goes to site team goes there to the site installation team, the customer changes his mind. Say यार वो ना उस टाइम पे मैंने मेरे वाइफ को कंसल्ट नहीं किया, कैन यू प्लीज चेंज इट टू सम अदर लोकेशन. और उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाता है, मटेरियल आपका ठीक से नहीं पहुंचता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो हम लोग क्या करते थे, फ्रॉम द टाइम ऑफ साइट विजिट टिल द एक्चुअल साइट मोबिलाइजेशन, इट टेक्स 5-7 days, क्योंकि नेट मीटरिंग का परमिशन आना है, ये सब एंड सो ऑन. तो ये टेप क्या होता है कि घर में लग जाता है और उनको दिखता है कि आपका इन्वर्टर कहाँ लगेगा, आपका जंक्शन बॉक्स कहाँ लगेगा. Similarly, we used to take a chalk powder and mark where the earthing pits are going to be installed, and maybe just take a chalk piece and show how the cable will be drawn and so on. Right. So this, what happens is this makes the picture very clear for the customer on how the installation is going to happen even before the installation team visits the site. Yeah. So now, so how do you can you have this first? Yeah. So how do you do this is, again, training your site engineer is very important. So again, you please ensure that where the installation is going on, ideally you send the lead of the installation team for the site visit, right? And don't send somebody and then send another team for installation, right? So that way there is a continuity. And then allow for future changes in the site, like you've seen in the first example you've shown that there is a building shadow that is falling up, right? So if there is a khali plot, empty plot beside the house, expect that a building will be built there. So please do not put your solar panel right next to that empty plot on the rooftop, right? So those things need to be considered for any future to avoid future issues. Okay? Yeah, Tanmay, next one, please. Yeah. Now, once the site visit is done, the engineering work is done, then your site mobilization actually happens. This is where the actual installation work, the team takes over. Now, two most important things that I would strongly recommend, urge, is for your every installation team, do a tool audit at least once in a quarter, right? And don't do it on a planned date, do a sudden inspection date, right? So what kind of tools are they carrying in their bags? Do they have all the tools required to complete a site now, or not, right? And secondly, also, what kind of protective equipment do they have? Please invest in good tools and protective equipment for your teams. They'll thank you for it. You, in the end, will be very, very, very thankful that you have actually invested in a good protective equipment uh, for your team, because any accidents, they will be far more expensive than any protective equipment that you can buy. Right? I'll tell you one example. Um, in our team, so we were installing a site in a very, very posh area called Jubilee Hills in an IAS officer's home. Now, our champion team, they didn't, their hammer was broken, Hathoda was broken. So one guy took a wooden block, put that Hathoda, and stuck a nail into it. Then he was hammering away. That the actual hammer fell 3 floors down. Now, the 3 floors down, hammer fell. We were very lucky. We should thank our staff because a customer was standing somewhere near where the hammer fell.
Secondly, his 50 lakh Audi car was there right beside, and it fell right next to that. We should thank our stars for that, because a hammer which would cost like 1,000 rupees would have created a huge loss for us, and also loss in money, loss in reputation, and all the issues. Right? So please do a tool audit for your teams, including uh, outsourced team, right, and a PPE kit. Right. Now, again, I will give you a list of all the tools in this presentation itself that you would ideally need for installation. You can, if you don't have a list, you can follow that as well. Yeah, next one, Tanmay, please. So you would want, now this is again one of our team members. So as soon as you are working on a commercial industrial site, you would want these guys to first lay a lifeline on these roofs and then have a harness attached to it, because fall protection is very, very critical, right? So all this one, again, this is something which is very common, you see. In fact, this is something that actually happened in one of our site. So we used to do a lot of welding on site, and during the grinding, the actual disc fell. Now this image is not from our site, but something similar happened, and the actual PP protected that person's eye. Right? So these are, you never know when accidents will happen, but it's always useful to be prepared. You will always thank yourself for being prepared on this. Yeah, yeah. Next one, please. Right now, these are the important things that I would request you to consider when you're training your installation team. Right? How do you handle the material? Now we also, again, now the panels are actually becoming larger and larger. Now there will be some person who will say, I'll be a hero, I'll carry one panel by myself, don't worry about it. Right? Please, you shouldn't. That is a strict no. Each panel should be carried by at least two people, always, and definitely not at the center. You will basically, what will happen is you'll end up creating micro cracks in the cells in the module, and these will not even be given as a warranty replacement. So end of day, what happens is the customer loses out. Right? So every panel, at least two people need to handle on each corner. No heroism at site. They need to follow everything on this. Right? Secondly, training on handling tools. Right? How to actually handle tools. So this, again, there are a lot of ITI institutes where they can be trained, or you can get the most experienced and qualified person to actually train these guys. Right? And thirdly, one more very important factor is, because not always these guys are, you or your senior members in your team are going to be at the customer site, and it will be your installers. Now, what happens is these guys will actually not know how to talk to the customer, right? Especially if you're doing residential installations, you might have access to the roof from inside the house, right? And C&I, if you're doing commercial industrial installations, they'll have their own safety rules. So these guys need to be aware of all of this, right? How to handle customers if in a residential context and a commercial industrial context. So there you set your clear expectations. Third most important thing is try to ban phones from the site. From the time the site starts till the time the site ends, it's good to not have a phone in utilized by the site members. Well, it again creates distractions. It will again create issues in terms of safety and accidents. Right? End of day, and also train your team in safety and rescue. Right? So if something happens like electricity shock, right? Does your team actually know
how to do CPR, right? How do you actually take care of somebody who's still under a shock, right? You don't go and hold that person, right? So those kind of things you need to train, get a safety person to actually start training. Now, as you grow as a company, these are the things which become very important, right? And at the end, I would say ये चलता है वाला attitude नहीं चलेगा. So this you'll have to be very very clear, right? तो heroism side पे नहीं चलेगा. ये चलता है, अरे सर इसमें कुछ नहीं होता है, मैं मैनेज कर लेता हूँ. So those things you have to be very very strict. That's when you'll start mastering your installation at the site. Right. Tanmay, next slide, please. Yeah. So these are a few slides again. So again, one more example I would like to share is when we used to mobilize the site at the warehouse. The team used to carry all the tools and material, but then they'll eventually forget some material at site, at the warehouse. Then they go to the site. फिर वो कहीं नियर बाई दुकान से केबल लेके आएगा and so on. So this again reduces your profit margins. It increases your time to install. It also, you will not get the quality that you would want from the nearby shop that you'll procure from a authorized dealer. So what we again used to do is more checklists, right? So when they start from the warehouse, you give them all the list of material and tools that they need to carry, and somebody takes it, and that's it. So all of this is basic paperwork, but paperwork saves a lot of time. It saves a lot of money for you, right? So all the tools and this, every person handles this and takes this up. Okay? Just give me a second, please. Yeah, sorry, guys. Yes. So you have all these checklists. I'll be happy to share these checklists with you. You can have a look. But again, please feel free to create your own list or as per whatever suits you. Right? These might be might be dated as well. Right? These are pretty old. And the next one, please. Yeah. So some examples I'd like to share, like what kind of installation quality we used to. Again, these are all our sites that we bring in. Like this is actually my home. We've installed in 2013, continuing to function 10, 11 years later, no problem. Actually, I should have shown you the current image, but yeah, it almost looks the same. Also show a warning label, and a good thing process to have is to have your phone number at the inverter, right? So this way the customer knows who to call in case of an issue, right? Have this printed in a board and stick it right next to the inverter. Again, now this, if you see, this is a elevated superstructure. Now what we used to do is, this is in Delhi. We also used to give a proper guttering system with water, pipe, and drains. Now, the customer, after washing the panels, they used to get water filled up in the buckets and use this for their own trees, whatever, for their own garden. So this way, we used to recycle the water, and this became a common practice for all our sites thereafter. So this was an idea given to us by a customer, and we started following, and so on. So you will see again, it's not shown in the picture, especially commercial industrial side. If you are compliant with the standards, you will have to install fire extinguishers and fire buckets and so on and so forth, right? And whenever you have termination on cables, please use these heat resistant laminates along with your thimbles. So whenever you crimp your thimble, you also use a heat resistant laminate. Then what happens is you will prevent even small chance of fire. Next one, please. Yeah, so these are a few other installations, like especially in case of C&I. Again, sheet metal roofs, please use FRP or metal walkways as required, always.
use a lifeline. I'll show you that as well. Again, uh, for inverters, we also used to have a proper cover so that it is protected from any other weather, even though these are all IP65, 68 compatible, but still it's nice to have this. Then you have all these cable trays. Next one. Yeah, and all these cables, it's good to mark this because today you're operational, tomorrow somebody else is coming for maintenance. Please mark where your cables are going with a simple paint stencil. And even for your DC cables, use ferrules. I believe that's a basic practice. I hope everybody is using that. But yeah, use labeling as much as possible. The easier you make it to understand for any new person who's at site to understand, the better it is. Okay. Next one, please. Someone. So again, this is another similar same site. So how the whole C&I thing looks like, the junction box, ACDB, DCDBs all combined. And this is the lifeline that we used to. Next one. The next one. Yeah. And finally, again, I understand we are running short of time. So finally, the quality assurance. Now, quality assurance has to be the owner's responsibility. So whoever is the owner, founder, CEO, manager, right? They have to ensure that the proper quality check for every site is done. What will happen is when the owner goes, the installation team is also afraid that अरे boss आएगा, बड़े boss आएगा और देखेगा system, right? So we have to ensure that at least for the first 50, 100 sites, the owner goes, checks the site, right? There is no ego in this. There is no time loss in this. It's always good if you're trying to build a sustainable and growing business, somebody from the top has to be responsible for this. Then you get a customer sign off from this, right? Again, I'll share this quality checklist that I've prepared in accordance with MNRE standards. Then you can modify it as you would like. And one important part is a lot of cases when you complete your installation, a lot of installers actually do not register the products for warranty. Then what happens is a customer suffers because the product is not registered, the serial number is not updated. So even though they have 5 year or 7 year or 10 year warranty, if the panel serial numbers and the inverters are not registered, the warranty will not apply at that time. Right. So once you complete your site, please complete the warranty registration and hand over all the documents clearly with the serial numbers, application details, all in a nice file. Keep a copy with you, hand over one copy with the customer. It will always be useful for future because even now, after 7, 8 years of installation, somebody comes and tells me, hey, I'm calling from Chandigarh and this is my site. I know what inverter is installed, what panels are installed. Then it will help me in actually providing service to that site easily, faster, right? And yeah, so that's I think that should be it. Yeah, Yeah. So yeah. So I thank you hope so much. this was useful. Yeah. Yes, sir. Yeah, sorry. Please go ahead. I cut you off. Yeah, please. No. I was saying I hope this was useful. You were able to actually get something, and I didn't rush through the presentation. No, sir, No, it no, was no, really fine. no. Yeah. So thank you so much, Harsha, for this. So guys, I just want last 10 minutes of yours on these last two slides, basically, right? So like Piyush in the starting explained what Aram exactly do, right? So for EPCs, we provide solar loans for their customers. Apart from that, we provide supply chain financing as well for project execution. We help in procurement, material procurement also from our SunStore platform. Apart from that, we provide engineering support as well. And last but not the least, we have a remote monitoring platform as well.
I think in the middle of the session also remote monitoring के ऊपर काफी बात चली थी. That Harsha was also saying that EPC customers should use the inverter portal only, right? So we provide that services as well. And to provide all these services, we have created one portal which is called Iram Partner Portal, right? So once you are onboarded, it is just like any other tool you guys must have used, right? आपको normally कुछ नहीं करना. You all you have to do is just on get yourself onboarded with your mobile number and OTP, and you will get access to all of these services. And it is as of now there is no cost. It is completely free, right? As soon as you are onboarded, like let's say you have a customer, आप अपने customers के लिए loan के लिए apply कर पाएंगे. अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, यू नीड शॉर्ट टर्म लोन वर्किंग कैपिटल, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको कंपोनेंट्स या कोई भी आपको इन्वर्टर चाहिए, आपको पैनल केबल वॉट एवर यू रिक्वायर, वी प्रोवाइड दैट एज वेल, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको अपने प्लांट्स मॉनिटर करने हैं irrespective ऑफ एनी इन्वर्टर ब्रांड, so we have an AROC monitoring platform where you can monitor all your solar plants irrespective of the inverter brand. जनरली क्या होता है, आपको अलग अलग इन्वर्टर पोर्टल्स पे जाना पड़ता है अपना प्लांट्स को मॉनिटर करने के लिए, राइट? बट वी हैव क्रिएटेड दिस सीमलेस प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन मॉनिटर everything at one place. Now coming to the next slide. So basically, recently we have launched one reward scheme for our EPC partners exclusively. So for the partners who have already onboarded with us and the new partners who will be getting onboarded with us, we have launched this scheme for them, and this is purely on loan disbursement amount, right? This scheme will last for the next is valid till April 2025 next year, right? So here we are giving few rewards and giveaways based on the disbursement amount you give us, right? So as you can see here on the left hand side, right, we are giving MG Windsor EV, MG Windsor EV, if you give us a loan disbursement amount of more than 12 crore, right? Second prize is Tata Tiago. This will give you once, if you give us the loan disbursement amount of 7 crores. Then third one is 40 grams of gold, right? We are giving this once you give us the disbursement amount of more than 4 crores. And the fourth one is MacBook, Apple MacBook, definitely. And this will be given once you give us the loan disbursement amount of more than 1 CR. And of course, there are terms and conditions as mentioned over here. So, guys, please, I'll definitely share the scheme after the webinar. I'll communicate to each and every one of you. And if you have any questions regarding now, let's come to the Q&A. Any questions you might be having related to the session, related to the scheme, related to ARM partner portal, related any questions you might be having for Harsha, please feel free to ask. Yeah. Okay, ji, Vedant ji. Any questions? Jagdish ji, No, Uh, sir. Harsha ji. good Hello. as of now, Harsha has already Hello. briefed everything very clearly and in an easy manner. Thank you. See, I am not sure whether I'm on board or not. I just wanted to have, to use this application, loan application, how to use it. Can you describe just? Sure. So what we will do, our customer success manager will reach out to you, right? What Okay, we can do okay. is we can schedule a personalized demo for you where Yes. he will explain you each and everything, how to use the application, right? And I just forgot to tell that, okay, we have recently launched with the app for it as well, right? So you can get in touch with us. Actually, this is our mobile. Yeah, here it is our mobile number also mentioned. You can definitely get in touch with us. You can take a screenshot of it. You can get in Okay. touch with us, book a personalized demo, and get on board. Okay, actually, I want Sure. to ask you something. When we reach to our customer, they want to know that their loan will be approved or not, and what percentage of Sorry, interest will be carried. Am I audible to you?
Sir, your voice is not clear. Okay, now it's clear. Yeah, please. सर जैसे कि हम कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर को इनिशियल स्टेज पे जानना होता है कि ये लोन अप्रूव होगा कि नहीं होगा, कितने परसेंट इंटरेस्ट पे होगा। तो हम क्या ये आपके ऐप में सब जान सकते हैं अगर उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स हम अप्लाई करेंगे? हाँ सर, लाइक डेफिनेटली। सो सर, व्हाट वी कैन डू इज, अगर आपके कोई भी कस्टमर्स हैं जिनको कोई भी रोल रिलेटेड क्वेरी है या कुछ भी है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कनेक्ट यू विद आवर सेल्स पर्सन, RM of that region, right? So yeah. सो आपको वेदांत एक RM अलोकेट होगा, रिलेशनशिप मैनेजर। एज सुन एज यू ऑन बोर्ड आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर असाइन होगा जो आपके रीजन को कैटर करता है। तो क्या होता है कि हर एक लोन और हर एक कस्टमर का एक अलग प्रोफाइल होता है, तो इसलिए स्टैंडर्डाइज इंटरेस्ट रेट्स या टर्म्स एंड कंडीशंस तो हम उसमें शोकेस नहीं कर सकते। बट जैसे ही आप अपने डिटेल्स शेयर करेंगे, बेसिक डिटेल्स कस्टमर के, इवन विदाउट शेयरिंग इट ऑन ऐप, हमारा RM कैन हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग द इंटरेस्ट रेट, एंड इफ एनीथिंग इज एल्स इज रिक्वायर्ड, ब्रिंग इट डाउन। तो रिलेशनशिप मैनेजर आपके साथ हैंड इन हैंड काम करेगा। इट इज ही हैज बीन असाइंड, ही विल बी असाइंड टू यू टू एंश्योर द सक्सेस ऑफ ओवरऑल लोन डिसबर्समेंट। So that process we have kind of set up. Okay, I have one more question related to the financing. हाँ जी। So, are we also financing to those projects which are under PMSY or MSSY or Kusum C? कुसुम वाला as of now no. कुसुम 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 एज ऑफ नाउ नहीं। PMFI वाला कर, सॉरी PM सूर्य योजना वाला कर रहे हैं। कुसुम वाला इज अंडर डेलिबरेशन। प्रोबेबली इन अ मंथ और सो विल डिसाइड ऑन दैट थिंग, बिकॉज उसमें जो चैलेंज आता है कि उसका जो टेन्योर है वो थोड़ा लंबा है, वर्सेस टिपिकली हमारे लोन टर्म्स 5 to 7 years के रहते हैं, जबकि आप कुसुम में देखेंगे तो उनका टेन्योर 8, इट गोज बियॉन्ड 10 years। So that's where it becomes a bit out of the thing, standard policy. Okay. हाँ हाँ, बट उसके अगेंस्ट में सप्लाई चेन फाइनेंस आप हमसे ले सकते हैं। दैट्स व्हाट वी कैन हेल्प यू आउट। Sir, one more question. हाँ जी। See, if a customer has taken loan from us for, say, example, 3 years. Right. Now, after 1.5 year, he sells out his. Can we transfer that loan on the new customer, or how can we collect the money from the customer? ट्रांसफर तो आई थिंक इज नॉट पॉसिबल। आई थिंक उसमें इट विल वर्क इज कस्टमर विल हैव टू रीपे द लोन व्हेन ही इज वेकेटिंग द होम, और या दैट्स द ओनली वे, बिकॉज कस्टमर के नाम पे लोन मिला है, जिसके नाम पे लोन मिला है, ही ओनली हैज टू रीपे द लोन। No, we can do one thing ना, likewise, no, vehicle finance में होता है ऐसा। vehicle finance में what we do, we transfer the loan on the new customer, whatever the remaining Right. amount is or remaining tenure is. Right. हाँ, बट व्हीकल फाइनेंस होता है, बट सो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एज ऑफ नाउ। गोइंग फॉरवर्ड इट में इवॉल्व, बिकॉज अभी आप देख रहे हैं कि इस मोस्टली जो इनिशियल लेवल पे हुए थे दोज वर फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। उसमें कभी ट्रांसफर वाला केस अभी बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं। Yes. So that's why the standard practices or standard way of doing business has not that evolved. I mean, it is still in the name of the customer who has bought it But initially. in that case, the problem is So, if a customer sells out and he goes away, say for example, हाँ he जी। has went out of India and now he is हाँ not paying, because since the solar system is on his name, right, but this he has sold out his house, so that new right. customer will not pay installment to us, and that customer who went away, he will also not pay to us, and we cannot do anything. That's true. That's true.
Yeah, let me just rephrase the question. The question is, see, somebody is taking the loan and then within 1.5 years he is selling the house and going away. So in that case, can loan be transferred in the name of the body? No, not renting, selling out. हाँ ठीक है हाँ तो in such scenarios what we can do let's say it's time for 5 years decides to do not he just want to resale the home to somebody else और वो जो टेन्योर है 5 की जगह पे अभी 2 साल उसने पे किया और रिमेनिंग 3 इयर्स के लिए ही इज नॉट अवेलेबल और उसने प्लांट अपना घर बेच दिया किसी को तो उस केस में अल्टीमेटली सिंस द लोन इज ऑन हिज बुक सो हिज सिविल विल बी इफेक्टेड दैट इज वन पार्ट सो यूजुअली कोई ऐसा नहीं करता है और इनकेस अगर वो ऐसा करता भी है कि हाँ मेरा अब वो लोन चुकाना ही नहीं चाहता ही वांट्स देयर आर टू सिनेरियोज वन इज he can foreclose this loan he can just repay the balance amount and he can keep the asset as it is in the for the new owner or else we will so we can have a legal recourse on this and we can reclaim the asset on our on like we'll go to this asset और हम लोग उसको पूरा जो भी प्लांट है वहां से उठा के हमारे पास देंगे और एंड दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू ऑन आवर साइड अभी जो कस्टमर का जो उसने डिफॉल्ट किया है उसके लिए तो उसका लीगल रिकोर्स होगा वो तो रहेगा ही नहीं, that's okay. But my point is, if a customer is available in India, you can find him out or you can take legal actions. But he has gone out of India, where civil doesn't affect him, or you cannot collect money from him by legal way. हाँ हाँ अगर उसको विजय माल्या बनना है फिर उसके बाद कुछ प्लान ही नहीं है सर अभी अगर मेरा मेरा लोन जो होगा वो तो घर के लिए अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं क्या हार्डली 4-5 लाख या 10 लाख का लोन होगा Yes, obviously, उससे हाँ ज्यादा नहीं तो होगा. हाँ तो इन दैट केस मैं भी कुछ नहीं कर सकता मतलब सी यूजली फॉर अ बिगर प्रोजेक्ट्स नो हम लोग जैसे 5 लाख के ऊपर या फिर जब बिगर एमएसएमई केसेस में वो क्या करते हैं वी एक्चुअली मॉनिटर द प्लांट ऑल्सो वी गेट द Okay, आईडी पासवर्ड ऑफ योर प्लांट एंड वी मॉनिटर द प्लांट परफॉर्मेंस ऑल्सो ठीक है right. अगर इन केस भी हुई है कि हाँ द प्लांट इज नॉट ऑपरेशन फॉर अ मंथ और सो वी डिस्कस विद द कस्टमर डायरेक्टली इफ देयर इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द परफॉर्मेंस और जस्ट अ नेटवर्क इशू इन केस Yeah. इफ देयर इशू द प्लांट इज आल्सो मतलब सो उसके लिए फिर बाद में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करते हैं हम लोग हाँ इफ कस्टमर इंटेंशनली डिसाइड्स कि उसको प्लांट में पे करना ही नहीं है और वो भाग जाना है तो वी कैन नॉट रियली डू एनीथिंग फिर वो उसको विजय माल्या बनने का शौक है तो वो करे और क्या कर सकते Okay. हैं जी Right. Any other question, guys? Vedant? अच्छा, इसमें और एक क्वेश्चन है. हाँ जी यस. Yes, विशाल जी बताइए. ये यदि हाँ हाँ, अभी ये जो सवाल जो डिस्कस हो रहा था उसी के साथ में और एक सवाल रेज होता है. जैसे कि प्रॉपर्टी बिक जाती है तो प्रॉपर्टी के साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो भी जो परचेसर है उसको हैंड ओवर हो जाता है. राइट राइट. राइट राइट हेलो. हाँ. तो उस केस में फिर उस केस में उस सोलर प्लांट का जो मालिकाना हक है वो भी जो परचेसर है उसको ट्रांसफर हो जाएगा ऑब्वियसली. नहीं अभी देखिए लीगली जो ओनर है उसका उस एसेट का वो एग्जिस्टिंग बंदा जो होगा वही रहेगा इफ ही वांट्स टू ट्रांसफर द एसेट टू द न्यू ओनर दैट वी कैन डू इट क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का भी आप बोले तो देखें तो उसका एक प्रोसीजर होता है जो नया ओनर है उसको एक प्रोसेस फॉलो करना रहता है वो जाके रजिस्टर करवाता है अपने नाम पे ट्रांसफर. राइट राइट राइट. वो तो खाली चेंज ऑफ ओनर का राइट एप्लीकेशन राइट दे तो देगा, वो सिमिलरली इधर से एनओसी सर चला जाएगा आपका जो पॉइंट सेलर समझ है गया उसकी तरफ मुझे से, तो वो अपने आप हो हाँ जाएगा. तो सिमिलरली वो तो इसमें वो कैसा तो रहता है अभी जैसे आपने बताया 2 साल बाद कस्टमर डिसाइड करता है कि उसको लोन नहीं भरना है और जो नया ओनर है सी अभी सोलर तो हर किसी के लिए बेनिफिशियल है सो अगर नया ओनर को हम लोग सारा प्रोपोजिशन बताएंगे कि मेरा ये जो एसेट है अभी इसका 2 साल का ऑलरेडी लोन भर चुका है 3 साल का लोन बचा हुआ है और ठीक है अभी को उसको नया इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं है ही जस्ट नीड टू पे द ईएमआई और जो एग्जिस्टिंग जो लोन रिपेमेंट होगा लोन ट्रांसफर वी कैन डू इट इफ कस्टमर इज ओके विद दैट वी कैन डू इट But for that also we need to come into agreement with that new customer, no? Then only he will. Yes, so the
Yes, yes, correct. So the entire agreement will have for new agreement with the new customer, stating that the loan tenure will be 3 years, or maybe in case if he says कि नहीं EMI ज्यादा है मुझे 4 साल का चाहिए, that also that flexibility can be worked out. Yes, that was my first question. That was the question which I wanted to ask. Okay, that is the transfer of loan on the new customer. That is what I. Yes, that That is was, possible. yes. That is possible. Okay, okay. That was my concern. That is possible. One more thing is, sir. One customer is already having plant in one house. Mhm. Now he has purchased another house. Okay. Now he wants this particular system to be transferred and installed into the new place. Is it possible? So I mean, so you are saying is the customer has a one plant with on over the loan, right? Yes. हाँ, तो एक प्लांट है जिसका लोन चल रहा है and he wants to Yes. transfer this asset to the new location. Yes. नहीं सर, वो नहीं हो पाता है क्योंकि क्या आपको भी पता है ऐसी फिजिक्स उठा के दूसरी जगह लगाना, उसमें एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, Mm. क्योंकि अब पहले उसको अनस्टॉल करना और उसके अंदर जो रिस्क होता है, जो डैमेज होता है स्ट्रक्चर का, केबल का, Yes. ये सारा एडिशनल कॉस्ट आ जाता है। Yes. ठीक है। एंड सिंस वी आर नॉट इनटू ईपीसी, सो गेटिंग अ राइट एस्टिमेट और उसके बाद में कितना टाइम लगेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो वी डोंट इंकरेज दिस काइंड ऑफ Okay. ट्रांजेक्शंस। Because there were question from one of our customer that I have purchased a new property and I want to shift this particular project on over there. I don't want to keep on with this my old property. I want to sell it out. I said no, it is not possible. Still, I will ask. Okay. अच्छा, और एक क्वेश्चन इसमें ऐसा है, यदि हमारे पास में कोई खाली लैंड पड़ी हो, उस जगह पे हम लोग प्लांट लगाए और उसका एडवांटेज हम जहाँ पे रह रहे वहाँ पे या जहाँ पे हमारा फैक्ट्री है वहाँ पे हम लोग उसका इस्तेमाल करना चाहिए, इज दैट पॉसिबल? So is it under open access? Yeah, that's what I want to ask, whether that open access is permissible in Maharashtra. See, open access policy is there in the entire, I mean, Maharashtra and even in pan India. So let's say if you have a plant of 1 megawatt under open access and you want to look, are you looking for a financing for open access or PPA kind of open access? नहीं, उस इन जनरल ऑफ टेक को लेकर हाँ, क्वेश्चन। ओपन एक्सेस में हम लोग, अगर आपका कस्टमर ओपन एक्सेस में है तो वी कैन डू इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फाइनेंसिंग ओपन एक्सेस में हम कर रहे हैं। पीपीए में अगर जाता है कस्टमर तो उसका उसका फिलहाल कोई हम लोगों का प्रोडक्ट नहीं है। बट ओपन एक्सेस में अगर वो कैप्टिव में जा रहा है, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट में, दैट वी कैन डू इट। नहीं, his question was specific to ऑफ टेक कि कैन एन ओपन एक्सेस प्लॉट से वो ऑफ टेक कर सकते हैं क्या एनर्जी? यस, अगर कोई एक्स जगह पर आपका प्लांट है और वाई जगह पर कंज्यूम करना चाहते हैं, टेक्निकली तो अंडर ओपन एक्सेस वी कैन डू इट। अभी मिनिमम अभी मेरा 100 किलोवाट, अभी जो न्यू गवर्नमेंट का पॉलिसी आया है अंडर ग्रीन ओपन एक्सेस, तो उसमें आपको मिनिमम 100 किलोवाट के साथ में आप यू कैन स्टार्ट विद ओपन एक्सेस, अर्लियर विच वाज 1 मेगावाट। सिंगल मीटर पे कम से कम 100 किलोवाट का होना चाहिए आपका सिस्टम साइज, सॉरी डिमांड। महाराष्ट्र ओनली। हाँ जी, ये महाराष्ट्र। इट इज फॉर महाराष्ट्र। देयर आर अदर स्टेट्स जहाँ पर ग्रीन ओपन एक्सेस स्टार्ट हुआ है, लाइक कर्नाटका, तमिलनाडु, आई गेस गुजरात में भी द बिल हैज बीन पास फॉर द ग्रीन ओपन एक्सेस। बट अभी उतने ज्यादा केसेस नहीं हुए सिंस इट्स न्यू पॉलिसी, सो ज्यादा केसेस नहीं हुए, तो देयर स्टिल सम एम्बिग्यूटी इन द मार्केट। सो वी आर कमिंग अप वन podcast also in the next month, which for the green open access only. So you once you subscribe about the ARM services, so you'll get the updates for this green open access as well. अच्छा, एक अपना क्या क्या सर्विसेज है उसका? सॉरी सर, का आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है बोलो। और उसके क्या क्या चार्जेस होते हैं, कुछ उसका आवाज डिटेल्स ब्रेक हो मिलेगा? रहा है। विशाल जी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है बीच बीच में, आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, आप फिर से बोलेंगे क्या? हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू है मेरे यहाँ पे। मेरा क्वेश्चन ये है हाँ कि हाँ, अपनी एरियम क्या क्या सर्विसेज दे रहा है उसका लिस्ट, और उसके क्या क्या चार्जेस होते हैं? हाँ हाँ, श्योर श्योर। सो
लोन के सर्विसेज के चार्जेस तो कस्टमर के लिए लोन है तो उसमें तो आपके लिए कोई चार्ज नहीं है, वो कस्टमर को ही पे करना वगैरह है। सप्लाई चेन फाइनेंस है, उसमें टिपिकली 1.25% से लेकर 1.5% मंथली बेसिस पे चार्ज लगता है। एंड दैट इज ऑल्सो जो टिपिकली वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट चार्ज रहता है, दैट इज देयर, एंड प्लस सम प्रोसेसिंग फी ऑफ द टोटल एप्लीकेबल सप्लाई चेन लिमिट। AROC, as of now, for our small partners, it's free of cost. AROC monitoring के लिए कोई charges नहीं है। Design services up to 10 services a month is free of cost. उस पर भी कोई चार्ज नहीं है अभी। अच्छा, विशाल, डिजाइन आई सर्विसेज होप यू आई। आर ऑफरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी, और मॉनिटरिंग भी अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है जी हाँ। ओके ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हाउ टू गेट रजिस्टर्ड विथ यू? आई थिंक ये QR कोड है, आप जो देख रहे होंगे यहाँ से आप स्कैन कीजिए। हाँ इट विल हाँ रीडायरेक्ट यू हाँ। टू द एप्लीकेशन। ओके और अदरवाइज नीचे एक नंबर भी है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं, वो मेरे कस्टमर सक्सेस कलीग का है। तो ही विल गाइड यू फर्दर, बट अदरवाइज आप मोबाइल ओके ऐप डाउनलोड करेंगे, सो इट इज काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अदरवाइज अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है ओके। उसके बाद, तो यू कैन रीच आउट टू आवर कस्टमर सक्सेस गाय ऑन दिस नंबर। जी। अच्छा, और कुछ ये पीएम सूर्यघर योजना के लिए भी कुछ सर्विसेज देने का प्लान है अपना? सर पीएम सूर्यघर योजना में हम लोग फाइनेंसिंग का प्रोविजन है, वो आप ले सकते हैं। हाँ, ओके यस सर। ओके। और अगर तो आप, उस केस में भी हमें डिजाइन वगैरह का सब मिल जाएगा? हाँ सर, हाँ पूरा हाँ। सपोर्ट मिलता है। और उस केस में अगर आपको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको नाइस। बहुत नंबर, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आपको एक साथ कोई अलॉट होते हैं, लेट्स से 50 100, और आपको हम्म प्रोक्योरमेंट करना है, तो उसके लिए आप किट्स का भी सॉल्यूशन है, सो विच वी कैन प्रोवाइड। एक पूरा किट मिल जाएगा आपको। मतलब अलग अलग जगह से मॉडल इन्वर्टर सब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिंगल किट में 5 किलोवाट या 10 किलोवाट का अपरेट से कस्टमर है, तो आप बता हम्म। सकते हो कि हाँ हमको 15 कस्टमर मेरे 5 किलोवाट के हैं, या 10 कस्टमर 3 किलोवाट के, तो उसका अगर आप मुझे बताओगे तो हम आपको यहीं से किट बनवा के आपको शेयर कर सकते हैं इंडिविजुअल लोकेशन पर। और कोई क्वेश्चन है विशाल आपका, या रजिस्ट्रेशन में तो क्या हम किसी और? आप सॉरी, आपकी आवाज आप ब्रेक हो गई थी उसका क्या विशाल। सपोर्ट देते हैं? किसका पूछ रहे हैं आपका? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है। किसका? मुझे हाँ। वेंडर रजिस्ट्रेशन नहीं है फिलहाल, तो क्या मतलब आपकी तरफ से कोई सपोर्ट मिल सकता है इस ओके, केस में? तो विशाल जी, आप आपका लोकेशन कहाँ पर है? नासिक। महाराष्ट्र। हाँ। ओके, नहीं तो महाराष्ट्र में फिलहाल ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन, मतलब वो वाला सपोर्ट, अच्छा एम्पैनलमेंट की बात जो कर रहे हैं ना आप? राइट राइट तो राइट हाँ, राइट। तो एज ऑफ नाउ कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वी आर हाँ। ऑल्सो, सिंस आई टोल्ड यू अर्लियर दैट वी आर नॉट अ ईपीसी, सो वी हैव नॉट empaneled ourselves on national portal. So we can अच्छा, discuss this separately, विशाल जी, कैसे अपन हेल्प कर सकते हैं इस चीज में, ठीक है ना? But sir, हाँ। why ARM is not providing any payout for loan cases? सो करेंटली सर, जगदीश जी अभी कोई पे आउट्स नहीं है, बट माय कलीग तन्मय has shared a detailed scheme regarding the benefits which we are giving, which I believe is more than the payouts. Yeah, that's okay. That's a separate matter. But हाँ, since see, Ecofi and Ratnakar and all people are now giving payouts for the individual loan cases as well. ओके। ओके, सो वी कैन थिंक ऑफ, बट एज ऑफ नाउ सर अभी कोई प्लान नहीं है। Because तो I had raised this with your employee also, Geenal, somebody. बिल्कुल। Yeah, yeah. ओके। She said, okay, we'll discuss it, but that is also a long back. I mean, so I thought if there is anything concrete over there, because it will एज ऑफ नाउ increase the interest of the EPC as well as the customer. I agree, sir. I mean, we'll discuss this point with my management also. But as of now, there is no such plans. And Because we have come, recently we just come up with us this brand, this promotions partner solar festival for Iram partners, that we yes. are focusing. Once, I mean,
See, these promotions and everything works only on the feedback. So I got your feedback. I'll just discuss with my management and will revert you. Definitely. Sure. Thank you. Yeah, just a little disclaimer over here. Our next webinar will be most basically on the monitoring part, solar monitoring performance, right? And I think today, आज के webinar में भी, we discuss much about monitoring and what how it should be monitored, etc., etc. So next week again, we are going to have one special guest with us, right? And I'll share invite with each and everybody, one of you, and just hope you guys again, join the next webinar next week. Yeah. Thank you. Thank you, everyone. Thanks for joining. Thank you. Thank you, everyone.